Listen carefully. What you are about to see is a total transformation. Transformation from definite disaster into prosperity. From less than 50 kilos of fruit to over 150 kilos of fruit per tree, a threefold increase. Farmers can get over 15 tons of fruit per acre. Not just better yields, but every other farmer would like many other benefits, like a well-developed root system, enriched topsoil with better soil ecosystem, stronger fruit pedicels which help improve the quality of fruit and reduce fruit dropping, thicker leaves and foliage which help protect and preserve your fruits, plenty of pristine white flowers and larger inflorescences, reduced flower and fruit dropping, a much bigger harvest of high quality kinus that are fewer small fruits, more in numbers, larger fruit of uniform size, and that too consistently year after year, which translates into higher income and greater prosperity. In such an orchard, there are massive hidden benefits that include reduced mortality of your trees and increased lives. You will have to use much lesser quantity of chemical pesticides, insecticides which are effective only for a relatively shorter period of time, and are also likely to cause long-term damage to your environment and topsoil, thereby affecting income as well as health of trees and orchards. We all know these harsh chemical pesticides and insecticides can become frightfully expensive. Instead, you will benefit by an upsurge in populations of beneficial insects, for example, pollinators like honeybees and parasitic wasps, and predators like beetles and spiders. Look at the unique step system from Sequoia Biosciences. In step system, STEP. S is for structured, T stands for treatment, E is enhanced, and P is for productivity. A process developed by Sequoia Biosciences, Pune, India. For quinoa farmers, step process helps fight the deadliest of all causes of complete disaster of the orchard and your incomes. A serious disease caused by the dreaded HLB. You may ask why it is so dreaded. It is so because it has remained uncontrolled for over 100 years. HLB infection is one of the most difficult to identify because by the time you do so, it is already too late. The blotchy yellowing of leaves is often mistaken for zinc deficiency. HLB weakens the tree, making it more susceptible to secondary infections like phytophthora. The lush quinoa leaves become like bare twigs with sparse foliage. Flowers and young fruit keep dropping. Globally, scientists believe there is no cure. Their only recommendation is to uproot the infected trees. Just imagine how much of a loss this would mean if farmers have to uproot 5 to 10 quinoa trees every year per acre. Now, uprooting is not necessary because of a path-breaking step system invented by me and brought to you by Sequoia Biosciences, a world's first. The step system has been effectively tested, proven, and even patented in countries like the USA, Mexico, and Brazil, which are among the largest citrus growing countries in the world. Our system has been appreciated and NDAs signed
by some of the world's leading research organizations like the Citrus Research and Development Foundation, University of Florida, and Texas A&M. The STEP system is the only proven system in the field as well as laboratory, using international protocols at the National Research Center for Citrus in Nagpur. This is India's premier research institution. The STEP system has also been tested on 35 different crops in various agroclimatic conditions in India, Africa, the US, Southeast Asia, and Latin America, under extreme situations of high rainfall, drought, temperatures rising to 48 degrees Celsius, and even below freezing up to minus 15 degrees Celsius. HLB is spread by the Asian citrus psyllid. Adults feed at an angle of 45 degrees to the leaf surface and are about 3 mm in length. The red-eyed nymphal stages are concentrated on young tissue. Their feeding causes young shoots to deform, directly impacting yields. There was no known cure. Growers were losing money due to the increased cost of plant protection on one hand and reduced yields on the other, and going out of business. To solve this problem once and for all for our farmer friends, what is the STEP process? STEP process has been developed, tested and proven effective. It delivers a double benefit. In just 1 month, you will see a profuse emergence of vegetative buds. Whereas in a plant protected merely by harsh chemicals, shows fungal attack on the emergence of inflorescence. Many buds do not reach maturity and fall, affecting future yields. Barely 2 months of STEP process and look at the growth of healthy new leaves that are glossy and bereft of symptoms of HLB. And in just 3 months after initiation of the STEP process, the leaves are free of disease and more numerous and have formed fresh branches. Look at the abundant shiny green fruit, and we are just 6 months into the treatment. Now the fruit ripening in the same orchard on the trees. The first effect of adopting the STEP process: a healthy tree, plenty of fruits from the tips of the topmost branches to the lowest branches. Not only is the fruit plentiful, but borne in larger bunches, and the fruits are also of uniform size. This can be seen from the tree that was half crippled by HLB and Phytophthora. The half that survived has made a good recovery, as seen by the number and quality of the fruit. The sawn off stumps of the main branches are clearly seen. Look carefully at the stems and leaves. There are no visible swellings that could indicate blockages. Most leaves retain the dark green color without the characteristic mottling of HLB. The psyllid was observed 3 times during the year, but the leaves show the absence of sooty mold fungus, an indication of severe psyllid infestation. The STEP system seems to encourage the buildup of natural enemies of the psyllids that suppress the pests. One more added benefit of the STEP process is that it possibly deters feeding and also helps crop build resistance to disease. Let us hear what a farmer friend has to say about our STEP system. नमस्कार, मेरा नाम आलोक बिश्नोई। मैं फार्मर हूँ किन्नू का, और मेरे पास 15 एकड़ फार्म है। पिछले साल मेरे प्लांट्स एकदम डिक्लाइन की तरफ चल पड़े। वो मतलब पीले होके उनमें जैसे कि फाइटोप्थोरा और हर तरह की बीमारी टाइप उसमें लगी और ड्रॉपिंग होने लगी, और वो बिल्कुल उसमें कई पौधे सूखने भी लग गए। तो काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया जो अपने एग्रीकल्चर है, उनको कोई फाइटोप्थोरा बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, पर किसी के ट्रीटमेंट से मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है। तो पता चला कि ये HLB बीमारी है। यहाँ पता चला कि अपने सिकोया बायोसाइंस पुणे की जो कंपनी है वो इस चीज़ का इलाज करती है। उन्होंने मुझे स्टेप सिस्टम के बारे में बताया, और पिछले साल फिर मैंने ये जनवरी में स्टेप सिस्टम इसको यूज़ किया, जनवरी लास्ट वीक में।
और उसके बाद मेरे जो अगले फरवरी मार्च में जो उतारा है उसमें मतलब काफ़ी 80% मेरे को मेरे जो प्लांट्स थे वो ठीक हो गए और फ्रूटिंग भी अच्छी आई है। और कुछ मेरे जो फ्रूट्स थे वो कभी गुच्छों में नहीं आते थे, तो वो भी इस बार गुच्छों में फ्रूट्स आए हैं और प्लांट्स की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। और फिर मैंने अगस्त में इस ट्रीटमेंट को स्टेप सिस्टम को दोबारा यूज़ किया और उससे अब मेरा जो बगीचा है वो लगभग 90% ठीक हो गया है। और मैं चाहूँगा बाकी फार्मर्स से भी आप भी इस चीज़ को यूज़ करके देखें और फिर इसका फ़ायदा अपने बगीचे को दें। लोग कहते हैं कि इसका खर्चा काफ़ी है, तो मैंने यूज़ करके देखा है तो ये एक टाइम पे अगर एक वक्त यूज़ करते हैं तो लगभग 130 से 150 रुपये पर प्लांट का इसकी कॉस्ट आती है। तो पर अगर 10 साल का प्लांट अगर इसकी डेथ हो जाए तो फिर ये आप सोच सकते हो भी अपने को कितना महंगा पड़ता है। और वही प्लांट अगर स्वस्थ है तो अपने को 250 से 300 क्विंटल फ्रूट दे रहा है, तो आप सोच सकते हो कि अपने कितने फ्रूट के पैसे इसमें लग रहे हैं। तो ये चीज़ अब किसान को खुद सोचनी पड़ेगी भाई कितना ये महंगा पड़ रहा है। और इसको साल में अगर 2 बार भी करें तो मैक्सिमम इसका 300 रुपये कॉस्ट आ रही है। तब ये आप देख सकते हो उसको भी ये इकोनॉमिकली कितना बेटर रहेगा। और मैं किसानों से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं और उनका खर्चा भी इससे ज़्यादा ही आता है और उनका फ़ायदा भी कुछ नहीं हो रहा। और अपने प्लांट्स भी हर साल एक दो प्लांट अगर 5 साल में देखें तो 10-15 प्लांट अपने चले जाते हैं। तो 10 साल का होने के बाद अगर प्लांट ख़त्म हो जाए, अगर 10 प्लांट भी चले गए तो अपना वो कितना उसमें से कितनी इनकम अपनी कम होगी। तो अगर इसको यूज़ करते हैं तो अपनी केमिकल जो खर्चा है वही बच जाता है और प्लांट्स की जो यील्ड है वही बढ़ जाती है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लांट्स में मेरे पीछे हैं भी फ्रूट्स के नंबर ऑफ फ्रूट्स कैसे हैं और कंडीशन प्लांट्स की कितनी बढ़िया है। मैं वासचंदर बागड़िया गांव बुतारा वाली, मेरे पास लगभग 40 एकड़ किन्नू का बाग है। पिछले काफ़ी समय से किन्नू के बाग के अंदर बूटे सूखने की प्रॉब्लम आ रही है। रुमाना जी ने मेरे को एक दवाई के बारे में बताया जिसके अंदर जीवाणु वगैरह है, तो मैंने उनसे संपर्क किया, उनकी दवाई को देखा। उन्होंने मेरे को बताया कि अगर आप चाहते हो सारे बाग में करो या कुछ भी करके तजुर्बा कर सकते हो। तो मैंने अपने कम से कम 16 एकड़ बाग में उसका तजुर्बा किया। तो जब ये बीमारी आई, आधा बाग जो मैंने छोड़ा था उसमें मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और जिसमें मैंने किया था उसमें मेरा कम नुकसान हुआ। तो जो बाग मेरा कुछ ठीक था उसके अंदर मैंने इसका प्रयोग किया तो उसमें मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, यील्ड भी अच्छी आई और बूटे भी पहले से कम 60-70% सुधार हो गया उनमें। तो दोबारा करूँगा। तो मेरे को ये स्क्वायर सिस्टम है स्टेप जो लगा रहे हैं इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया लगा और मैं तो कोशिश है मेरी भी अगली बार 40 का 40 एकड़ करूँ। बाकी डॉक्टर साहब जो हैं बार बार यहाँ आते हैं, मौके पे देखते हैं, इन्होंने आगे सुझाव भी दिया। और इस बार मैंने दूसरा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी बाग में नहीं किया, तो मेरे को हिसाब से बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं जिम्मेदारों को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इसका तजुर्बा ज़रूर करें, ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा करके ज़रूर देखें ताकि आपको पता लगे तो आगे से हमें अपने बात को सुधार सकें। धन्यवाद। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋਠਾ ਪੱਕੀ ਔਰਚਰਡ ਦੇ ਓਨਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੈਡੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸੈਕੋਇਆ ਦਾ ਸਟਿਪ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਰੂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੈਡੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਸੈਕੋਇਆ ਸਟਿਪ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ भी इन्हों का की अनुभव रहा। फार्म हाउस में भी पूरा टाइम देता हूँ। इस कोया कंपनी के स्टेप सिस्टम से पहले इस बाग की हालत को बढ़िया नहीं थी। इसमें गोली साइज बनता था या जो पौधे थे उनकी सर्वाइवल काफ़ी कम थी और मर रहे थे पौधे। तो ये फरवरी में इनके संपर्क में आके इनका ट्रीटमेंट शुरू किया है। तो आज मैं सोच रहा हूँ भी इसमें रात और दिन का अंतर है। इनका जो ट्रीटमेंट है वो सफल हुआ है। सफल तो प्लांट बताता है, हम नहीं बताते। जो प्लांट आप देख रहे हैं इसमें सारे कम से कम 13 किले में है मेरे ये बाग जो है। तो इनको हाफ करके दिया था, हाफ
प्लॉट्स एक बारी में दिए थे, हाफ बाद में, लेकिन उनका रिजल्ट लिया इसलिए सब सारा प्लॉट उनको दे दिया और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। पेडीवाल जी, उसमें थोड़ा ये बताना कि जो आपने प्लॉट्स फरवरी में स्टार्ट किया था और उसमें और दूसरे जिसमें आपने ट्रीट नहीं किया था, क्या डिफरेंस था, कितने बूटे मर गए? था कुछ डिफरेंस करके ही आपको दूसरा प्लॉट दे दिया था और डिफरेंस बहुत था। और कितने प्लांट्स आपके जो डेड हो गए? डेड तो आप समझो भी कम से कम 70-80 प्लांट थे जो हम सोच रहे थे भी इनको उखाड़ना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली 1 एकड़ जगह मेरी ऐसी थी जो कि सभी एडवाइस करते थे इसको उखाड़ दो, रीप्लांट करो या इसको बिल्कुल उखाड़ दो, जो कि आज फुल्ली सर्वाइव्ड है और उसमें फ्रूट भी अच्छा है। तो आपका ये ऑर्चर्ड कितने टोटल प्लांट्स हैं और कितने में अभी ये चढ़ा है ठेके में? ये लगभग समझ लो आप 950 प्लांट है। वैसे तो 1060 हैं, लेकिन कुछ छोटे प्लांट भी हैं। तकरीबन 950 प्लांट्स हैं इसमें जो फ्रूट पे हैं और आज ये 19.5 लाख रुपए का ठेके पे चढ़ा है, जो कि अब वो एक्सपेक्टेशन है। What does STEP do? It increases your profits manifold. It increases yields by as much as 3 times and it reduces cost. It produces a healthier tree, better, thicker and greener crowns of leaves. Trees that have superior flower holding capacity support larger inflorescences that attract more bees and improve pollination, which leads to more fruit per tree, larger bunches of fruit and lesser fruit dropping. STEP system has been successfully tested and used on several crops besides citrus like cotton, rice, wheat, Bengal gram, maize, numerous vegetables like capsicum, potatoes, chilies, tomatoes, cabbages, cauliflowers and many more. A patented system of Sequoia Biosciences Private Limited. Kino farmers can benefit once they adopt this tried and proven system. Get in touch with us today. You have nothing to lose and everything to gain.